Very good evening to all of you, all the participants who are present in today's session. On behalf of NJ family, I, Amol Poddar, welcome you all for today's presentation. As you must be knowing, the topic of today's presentation is investing in times of war, rising interest rates, and volatility. So today we have with us Mr. Kishan Sharma, who is Deputy Vice President for HDFC Mutual Fund as well as the national lead trainer for HDFC Asset Management Company. Mr. Sharma has until now conducted more than 1,500 seminars and investor awareness sessions across India and even outside India. I mean, so which I think so is a record in itself for one person to do so many sessions back to back. Now, as far as today's topic is concerned, many of people who are present today in the presentation may already have started your investment journey, and some of you have yet not. I think so. So current investors हो या जो prospective investors हो, सबको एक चीज तो पता है कि wealth creation in itself is a very long journey. But the issue is, in spite of knowing this small thing, that it is a long journey, which means that we need to be patient. We need to be, get accustomed to all the ups and downs which go on in the market. In spite of knowing all those things, when the actual bad or disturbing events are happening around us, that is the time when our core belief gets shaken. Once again, in spite of knowing, there are too many doubts which start coming into our minds as investors. So the objective of today's session is कि once again, in a way, there are too many things going on in the market and worldwide which are, which are creating a slight concern for all kinds of investors. So to answer all those doubts, questions, queries, and in reference to context to those things, I will request Mr. Sharma to share his opinion, his knowledge with us about the entire topic and how to stay invested, or how to start investing in turbulent times. Or then, if you are already a very old investor, how to erase the doubts which are coming into our minds while staying invested. So I now request Mr. Sharma to please start the presentation. I will, sir, आपको hand over कर रहा हूँ मैं. आप please start करें. Thank you. Thank you, Amolji, for this wonderful opportunity to connecting with friends from NG once again. Amolji, just a little guidance I need from you. Shall I talk in Hindi or English? किस पे बात करें, sir? National event. So for the benefit of people in South, we will try to keep it in English. We have one sound. Okay, great. Thank you. Then I'll talk in Hindi. Everybody understands. English में भी issue नहीं, but South में थोड़ा हिंदी का issue right, है. I understand that. Yeah, that's good. That's that clarity I wanted to have, right? So great, Amol bhai, thank you very much. And although the topic of today is interest rates, impact of rising interest rates on markets, impact of war in markets, and whatever else is happening world over. Recently, yesterday we have a credit policy from our own RBI, and then few days back, 15 days back, we have a monetary policy FOMC report from Federal Reserve, right? And if you look at the Federal Reserve stance, that has changed. Why that has changed, we'll try to understand that. What is the impact of that in the markets, we'll try to understand that. But before I start talking on the subject, friends, let me tell you with utmost honesty, my understanding of this impact of Ukraine-Russia war on the markets, and my understanding of rising inflation on the markets, and my understanding of rising interest rates on the markets is no more compared to your understanding, right? There's nothing different I can tell you which will happen. But normally when I try to understand how exactly they will impact the markets, believe me, I never try to build my own perspective. I just visit past. I just read history. Is something is happening in the markets? Is something happening in the economy? Is something happening in the policies of Federal Reserve and central banks which has never happened earlier? If that is not the case, if I see, if I observe, if I feel that whatever is happening in the markets, whatever is happening in the economy has happened earlier, I don't have no tension, no stress, because that gives me clarity exactly how markets will react. And to any policy change in policy stance, to any news which comes, to any development which happens in the economy and markets, believe me, friends, markets have two reactions. The reaction is
The Daniel Kahneman, the father of behavioral economics, explains in a very beautiful way. It says that thinking fast and slow. Whenever you receive any news, you immediately respond to that news. That's called thinking fast. And after 2, 3 days, or maybe after fortnight, you will see that your stance towards that news, your reactions toward that news starts changing. That's called thinking slow, right? So that any development happens on interest rates, on war, or any kind of policy measures, markets will have twin reactions. First, immediate reaction of the market, and then reaction after some time. And this entirely we will try to understand. Amol bhai, I'll request you because I'll take my talk forward with the help of the presentation. Yeah, that's great. Thank you. So, friends, we can see with the help of this presentation, we'll try to understand. I not yes, sorry. Yeah. So, friends, welcome once again. Dasha or Disha. Dasha means what's happening now, and Disha means what's going to happen tomorrow. I'm not here to forecast. I'm not here to anticipate what's going to happen in the markets, but I'll just try to discuss with you whatever developments are happening, whatever concerns we have, how they panned out in history, and how they will impact markets in future. This is the biggest concern here. Day in, day out, we read newspapers, and whenever we watch TV, we come across this discussion that US has highest ever inflation in the last 40 years, and crude prices are at levels we have seen in the past in 2008, right? Since crude price is rising, fuel is rising, energy has become expensive, and we know that in all economic activities, energy has a role into it, and this has impacted the inflation in the world. And secondly, food inflation. Food and energy, two headline inflations, are at the peak. We have never seen wheat prices as they are today in the past several decades. Why it's happening? For a very simple reason. Ukraine and Russia are one of the biggest and largest exporters and producers of wheat. Right? So this is what the concern of entire world. This is what 2022 has brought to us. And some of the economies fear that there will be stagflation. What is stagflation? That there will be a persistent, sustained inflation without corresponding rise in GDP growth rates. Usually, friends, what happens whenever inflation rises, it denotes that it means that GDP is growing. But sometimes it happens that GDP doesn't grow, but inflation keep on rising, and that's called stagflation. Stagflation is a very difficult challenge to overcome, and that impacts markets, and that impacts the financial markets, be it bond markets or be it stock markets. Are we into a state or scenario called stagflation? That we will try to understand this, friends. So look at this chart, friends. Look, any country, I have brought to you the inflation reported as on February 2022. Very few countries have reported inflation for the month of March. Most of the countries have reported inflation for the month of February only. So if you look at the South Korea, is less than 5%. But then I brought to you advanced economies like the UK and US, and I brought to you Euro area, advanced economies, and BRICS, Brazil, South Africa, and India. So if you look at inflation in South Africa, about 5%, India about 5%, UK about 5% at 6%, highest in last 40 years, and US 7.9%, Brazil 11%, and Russia about more than 15%, 16%. Friends, now look at this chart. Pause here for a moment and try to gather one important thing. And what is that? I have been a student of economics for the last 36 years. 6 years I read economics in my college. Almost 29 years I'm working with mutual fund industry. I have seen markets, I have seen economies, I have seen inflation for the last 35 years. Never in my memory I recall a stance where India's inflation is lower than the inflation of US. Today India's inflation is at 6%, and the inflation of US is 7.9%. Something unbelievable, right, friends? I have never seen this in the last 35 years. And record says that at 7.9% inflation, US has the highest inflation in last 40 years. And that's the reason, friends, that your rupee compared to dollars is not reacting the way rupee has reacted in 2013 and 14 when Federal Reserve announced tapering. 15 days back, again, Federal Reserve has announced tapering. They have stopped doing quantitative easing. They have stopped buying bonds. Rather,
they have declared on 16th of FOMC report that they are going to reduce their balance sheet size. Even then, the rupee has not reacted. Rupee has remained range bound, somewhere at 74 and 76 of rupees. And this is something very interesting. But what impact this high inflation US will bring on markets and economies? This is what, friends, will try to understand. Inflation is rising, ever rising. This month's inflation is higher than the previous month's inflation thanks to the Ukraine war. Russia-Ukraine conflict is likely to impact inflation to remain elevated, and this has resulted into a stance change of several advanced economy central banks. Many central banks have started rising interest rates. US has also increased interest rates this month. The Fed fund rate, which used to be close to 0%, now is at 0.5%, right? Fed's funds rate. So the committee has decided, FOMC is the Federal Open Market Committee report. There's a statement of FOMC that they have increased the interest rates to 0.5%. And additionally, the committee has decided that they will stop buying bonds. Rather, they will start reducing their treasury securities. What does it mean? Reducing treasury securities means if they have 100 bonds, out of 100 bonds, if they will sell 10 bonds, 10 bonds will come to the economy, and if 10 bonds is worth rupees $100, $100 will go out of the economy. That is reducing liquidity. So the measure which Fed has taken will have twin impact: increase in yields, increase in interest rates, and reducing money supply, reducing liquidity. And we all know that liquidity supports markets, be it bond markets, be it commodity markets, be it stock markets, billion markets, or even forex markets. There are 5 markets which we will try to understand the impact of these measures on economy as well as markets, for instance. Only by reading stock markets will not be able to understand what will the impact on the economy. Now, friends, look at this. First myth, right? The first myth is, if there is a rise in oil prices, markets will react negatively. I don't believe in this theory. As I told you at the outset of this discussion, friends, there are 2 reactions. Reaction, which is immediate reaction, and reaction, which is a slow reaction. I'll tell you a very interesting story, friends. Just try to understand, relate this, how we react in this markets. This is a incident happened with my family in my neighborhood 50 years ago. I was a small kid. I don't remember any such incident, but my mother has shared with me. Olden days, whenever you receive telegrams, now, Sir, yes. sir, one small request. I asked actually to use both the languages for the benefit of all the people, but thoda Yeah. Hindi English आप please try to make sense. ओके, लेट्स बिकम अमोल भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है खिचड़ी में, पर ठीक है, कोशिश I करूंगा know, मैं. I know. ओके, थैंक यू. Sorry, That's sorry. great. Thank you, Amol bhai. Yeah, wherever the theories is there, principles is there, I'll ensure that I'll talk in English. Some of the things I'll narrate in Hindi as well. Thank you, sir. Thank you. So I just wanted to share a very important learning in my life, friends. Right? News will come. I don't say that news are not wrong. मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो खबरें आप सुनते हैं, टीवी में जो पढ़ते हैं, टीवी में जो सुनते हैं, अखबारों में जो पढ़ते हैं, वो गलत है. नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूँ. मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तेल के भाव नहीं बढ़ रहे हैं. मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ जो खबरें आप सुनते हैं, जो खबरें आप पढ़ते हैं, क्या वो आपके काम की हैं, राइट? I'm from Jodhpur, and my family used to stay in Jodhpur old city. My address was Krishna Sharma Khagal Jodhpur. 3 lines: name, मोहल्ले का नाम, and city का नाम, and newspaper. ये letters used to come, चिट्ठियां आ जाती थी. तो हमारे मोहल्ले में 2 लोग एक ही नाम के थे, 2 कृष्ण शर्मा, assume that 2 गोपाल शर्मा, राइट? एक फैमिली के घर में टेलीग्राम आया, राइट? जैसे ही उनके पास में टेलीग्राम आया, तो टेलीग्राम तब लोग खोलते नहीं थे. टेलीग्राम जैसे ही डाकिया बोलता था टेलीग्राम, द लेडीज ऑफ द हाउस स्टार्टेड क्राइंग, राइट? उनको लगता था टेलीग्राम आने का मतलब है 100% बुरी खबर है. एंड दे वर मोर कंसर्न अबाउट देयर सन हु हैज लेफ्ट फॉर चेन्नई 4 days ago. वो चेन्नई मद्रास के लिए चला गया था 4 दिन पहले. वो चेन्नई पहुंच गया, ये खबर के पास में नहीं आई थी. तो जैसे ही उनको टेलीग्राम मिला, वो घबरा गए और घर की जो महिलाएं हैं वो रोने लगी कि अरे बुरी खबर आई है, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जो बाहर चला गया होगा. तो मोहल्ले के सारे लोग वहां पर आ गए, उनको सांत्वना देने लगे, उनको सपोर्ट देने लगे. डोंट क्राई, वी आर देयर विद यू, नथिंग बैड विल हैपन, लेट योर हस्बैंड कम.
प्लीज बी काम, राइट, ऐसा करके उनको शांत करने लगे। और ये शांत कौन कर रही थी? दूसरे गोपाल शर्मा जी की वाइफ शांत कर रही थी। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा दोस्तों, दूसरे गोपाल शर्मा जी की वाइफ इसको शांत कर रही थी। 2 घंटे निकल गए इस बात में। 2 घंटे के बाद में जो गोपाल शर्मा जी जिनके घर में टेलीग्राम आया था वो आए, और आए, उन्होंने टेलीग्राम को खोला और टेलीग्राम को पढ़ा। पढ़ने से उनको बात समझ में आई, ये टेलीग्राम उनके लिए नहीं है, दूसरे गोपाल शर्मा जी के लिए। अब दूसरे गोपाल शर्मा जी के घर के लोग रोने लगे। जो जो महिला पहले दूसरी महिला को सांत्वना दे रही थी कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, अब वो परेशान हो गई क्योंकि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और वो सीरियस था और हॉस्पिटल में एडमिट था। आपको कुछ बात समझ में आई दोस्तों? ये पहले गोपाल शर्मा की फैमिली 2 घंटे तक क्यों रोती रही? इसलिए रोती रही कि उन्होंने दूसरे का टेलीग्राम पढ़ लिया, उन्होंने दूसरे का टेलीग्राम रिसीव कर लिया, उन्होंने दूसरे की खबर सुन ली। क्या खबर गलत थी? बिल्कुल नहीं। आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो खबर आपके लिए नहीं थी। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज द न्यूज इज गुड फॉर यू, is the news of any use for you, or it's a noise? If news is of no use to you friends, it's noise, right? और इस मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस बात को समझने के लिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा और आपको यकीन होगा जो बात मैं आपको कह रहा हूं। और ये क्या है दोस्तों? ये है कि कोई भी दुकानदार हमेशा उस ग्राहक की चिंता करता है जो संख्या में ज्यादा होता है, जो उसको ज्यादा ज्यादा बिजनेस देता है। एवरी बिजनेसमैन इन दिस वर्ल्ड, every shopkeeper in this world always try to make his policies in favor of a group which gives them the highest sales, right, for their businesses, right? You always take care of your consumers, of your customers who gives you maximum business, right? तो ये टीवी वालों का मैक्सिमम बिजनेस कौन देता है? ट्रेडर्स, जो 24 घंटे खबर सुनते हैं। और ट्रेडर्स की संख्या भी ज्यादा होती है। अगर मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं तो 90% ट्रेडर्स करते हैं और 5-7% ट्रेड ही इन्वेस्टर्स करते हैं। इन्वेस्टर की संख्या बहुत कम होती है, ट्रेडर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और टीवी जो न्यूज देती है उस ट्रेडर को देती है, टीवी जो न्यूज देती है उस ट्रेडर को देती है। ट्रेडर के लिए न्यूज जरूरी है। ट्रेडर के लिए न्यूज जरूरी क्यों है? क्योंकि वो मार्जिन में खेलता है, उसकी औकात 10 रुपए होती है, खेल 100 रुपए का खोलता है। Any impact, any negative impact of the news can wipe out his capital by 50% to 80% in a single day, sometimes even 100%. Sometimes even the broker will give a margin call, right? They can lose entire capital in a single day due to any new development in economy or in the markets. That's why traders are very sensitive. Traders are very conscious towards news. They keep watching TV on a continuous basis. तो टीवी जो खबर देता है, टीवी जो चिंता बताता है, टीवी जो कंसर्न्स होती है वो ट्रेडर्स के लिए होती है। चिंता क्या है? चिंता ये है कि इन्वेस्टर उस खबर को सुनता है जो उसको नहीं सुननी चाहिए। गोपाल जी ने दूसरे का टेलीग्राम पढ़ लिया, 2 घंटे उनकी वाइफ रोती रही क्योंकि उन्होंने दूसरे का टेलीग्राम पढ़ लिया। दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट गिरता है, क्या ये सही है? सही है। पर आपने ये देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के 2 महीने बाद क्या होता है? क्या आपको याद है? आपको याद नहीं है। किस दिन मार्केट में न्यूज आई, उस दिन मार्केट में क्या हुआ, ये आपको याद रहता है क्योंकि यह ट्रेडर का रिएक्शन है, ये इन्वेस्टर का रिएक्शन नहीं है। एंड व्हाट यू नोटिस, व्हाट यू रिकॉर्ड, व्हाट यू रिमेंबर, व्हाट यू यूज इज द रिएक्शन ऑफ द ट्रेडर, नॉट द रिएक्शन ऑफ द इन्वेस्टर। ये एक मामूली बात है जो हमें समझने की जरूरत है। हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो बाजार गिरता, हरगिज नहीं। ये चार्ट आपके सामने है दोस्तों, आप चार्ट को देखिए। 20 साल का चार्ट, 22 साल का चार्ट मैं आपके पास में लेके आया हूं। आप देखिए बाजार तभी बढ़ता है जब तेल के दाम बढ़ते हैं। तेल के दाम कब बढ़ते हैं? तेल के दाम पर तब बढ़ते हैं जब डिमांड बढ़ती है। डिमांड कब बढ़ती है? जब तेजी आती है। तेजी आने पर ही बिजनेस अच्छा होता है और तेजी में ही बिजनेस का मुनाफा होता है। और जब बिजनेस का मुनाफा होता है दोस्तों तो बाजार बढ़ता है। कितनी मामूली सी बात है। रिश्ता तेल का और बाजार का क्या है? Sustained rise in oil prices. I'm not saying abrupt rise in oil prices. I'm saying sustained rise in oil prices is good for the markets. In fact, sustained abrupt fall in oil prices have resulted into the fall in markets. आप देख सकते हैं 2008 में, आप देख सकते हैं 2020 में, आप देख सकते हैं 2016 के अंदर भी। जब भी अचानक तेल की कीमतें गिरती है तो बाजार गिरता है दोस्तों, ज्यादा गिरता है। अचानक तेल की कीमतें बढ़ती है तो जरूरी नहीं कि बाजार गिरे, पर यह हमेशा हुआ है कि जब भी अचानक तेल की कीमतें गिरती है तो बाजार गिरता है।
इस रिश्ते को आप समझ लीजिए दोस्तों. That is something very interesting, friends. I want to share with you, not only with crude prices, not only with inflation, but same here for the interest rate prices. And that's why I salute General Kahneman, who has explained us we should not think fast in markets, we should think slow in the markets, right? तेजी और मंदी में से अगर चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? आप हमेशा तेजी को चुनेंगे. Friends, this is what we will try to understand in next 30 minutes, right? Now, the second concern of the markets and second concern of the world is, will the GDP growth rates of world will collapse? Will the GDP growth rates of the world will fall in 2022 and 2023? Why world is fearing fall in GDP growth rates? So very simple. The biggest contributor to global GDP growth rate is a country, not US. It's a China. US is the largest GDP in world, but GDP growth, I'm talking of GDP growth here. China is the biggest contributor to the year-on-year GDP growth rate, and China is in trouble. China post-COVID is in a great trouble. Why China is in trouble? This is not the discussion of today's subject. I'm not going to cover that. If time permits, I'll definitely try to touch that, because that's a very important development which is happening in neighborhood. And then any negative news for China is always positive news for India, because India can replace China, right? A fall in GDP growth rate of India can in China can help India to grow, right? Can help India to get higher manufacturing in India, attract capital, and that can support India to grow at a fast pace, right? That's very interesting what's happening in China. So what's happening in China, friends? First time in 30 years, the government of China has targeted GDP growth rate at 5%. Never before they have targeted 5%. It is the only country in the world, believe me, friends, only country in the world which is always where the actual GDP growth rate is always higher than the targeted GDP growth rate. It has not happened in any country. For the last 30 years, I repeat again, for the last 30 years, this is the only country where the actual GDP growth rate was always higher than the target GDP growth rate. That country has reduced its target of GDP growth rate at 5%. The country which was growing at 10% plus for the last 20 years, right? Not last 20 years, before 2015. उस देश की हालत ये हो गई है कि केवल 5% जीडीपी ग्रोथ हुई. जो फॉल जो हो रहा है, जो चाइना को फॉल हो रहा है, it will impact no less than 25 countries in the world जिनसे ये commodities इंपोर्ट करते हैं, रिसोर्सेज इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत से देश हैं जो चीन की इस परेशानी की वजह से परेशान होंगे और उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट कमजोर होगी. तो क्या ये बुरी खबर है? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बुरी खबर नहीं है. इसका हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा. दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट भले ही कम हो जाए, पर हिंदुस्तान को इसको फायदा होगा. कैसे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, फ्रेंड्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. Now I come to the Federal Reserve decision, the decision of Federal Reserve that they have increased interest rates and they're reducing the liquidity. This is sure, friends. What is interest rates? Interest rate is a price of money. It's a price of money. So if a price of money will rise, money will expensive. And when the money will become expensive, the stuff which you buy through money also becomes expensive. So expensive money will always lead to expensive commodities, right? Now, what does it mean? It means that कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो पैसा महंगा हो जाएगा. आप पहले पैसे को डिमांड करते हैं. अगर आपको if you want to buy say bananas, right? You want to buy a dozen of bananas. So how you buy dozen of bananas? You buy dozen of bananas by paying the price of bananas, say 50 rupees dozen. वो 50 रुपए आप पेमेंट करते हैं तब आपको बनानास मिलते हैं. पर वो 50 रुपए आपके पास आए कहां से? उस 50 रुपए की भी तो कीमत है. वो 50 रुपए की कीमत ज्यादा होगी तो आप कम बनाना खरीदेंगे. वो 50 रुपए की कीमत अगर कम होगी तो आप ज्यादा बनाना खरीदेंगे. क्योंकि money is also a commodity, friends, right? So whenever price of money falls, the valuation of commodities, the valuation of stocks, the valuation of bonds rises. And whenever money becomes expensive, the valuation of commodity, the price of commodities falls. इस inverse relationship को आप याद रखिएगा दोस्तों. तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मतलब पैसा महंगा हो रहा है, तो बॉन्ड सस्ता हो जाएगा, स्टॉक सस्ता हो जाएगा, घर मकान सस्ता हो जाएगा, रियल एस्टेट सस्ता हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएगी. और जब भी पैसा सस्ता होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे. इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ मनी. व्हेनेवर द प्राइस ऑफ मनी फॉल्स, द प्राइस ऑफ बॉन्ड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, एवरीथिंग राइसेस. इस रिश्ते को आप याद रखिएगा. और एक इंटरेस्टिंग बात अब आपको मैं बताता हूं.
कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर अगर बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती गिरती हैं, स्टॉक प्राइसेस गिरती हैं, तो क्या बाजार गिरेगा? नहीं दोस्तों, कम से कम इतिहास ये नहीं कहता। मैं फिर दोबारा एक बात आपसे कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी समझ आपसे ज्यादा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो मैं आपसे कह रहा हूं वो सही है, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि राइज इन इंटरेस्ट रेट डज नॉट इंपैक्ट मार्केट्स। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास ये कहता है कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जरूरी नहीं कि बाजार गिरे। दोबारा बोलता हूं, इतिहास ये नहीं कहता। हमारी समझ क्या कहती है? हमारी समझ ये कहती है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बॉन्ड के प्राइस गिरेंगे, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे स्टॉक्स की प्राइस गिरेगी। ये सही है, पर इतिहास कहता है ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस विषय की हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, ये विज्ञान नहीं है। दिस इज नॉट साइंस। History of Fed rate changes suggests that a rise in interest rates normally happens during growing economy. बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। I'm going to touch upon a very interesting aspects of inflation. इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आसानी से समझ में नहीं आती है, और जिसको समझ में आती है उसको इकोनॉमी समझ में आती है। इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है सिवाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को समझना ही मॉडर्न इकोनॉमी को समझना है। इसलिए जो कुछ मॉडर्न इकोनॉमी है वो लास्ट 100 सालों की इकोनॉमी है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपसे बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, हैव ए पॉज और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिए। इन्फ्लेशन बढ़ने को मत याद रखिए, याद रखिए इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। या तो महंगाई बढ़ती है सप्लाई शॉक की वजह से। सप्लाई शॉक की वजह से महंगाई तभी बढ़ती है जब तक सप्लाई नहीं होती है। जैसे ही सप्लाई आने लगती है महंगाई कम होने लगती है। तो दैट्स अ टेम्पररी इन्फ्लेशन। व्हाट इज सस्टेन इन्फ्लेशन? Sustained inflation is inflation will keep on rising year on year, will keep on rising month on month, which is a permanent inflation, which is a long lasting inflation. वो कब होता है दोस्तों? वो तभी होता है जब इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ता है और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, राइट? What does it mean? सस्टेन इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ने का मतलब ये है दोस्तों कि इकोनॉमी में तेजी है। तो मार्केट को क्या चाहिए दोस्तों? तेजी चाहिए कि मंदी चाहिए? तेजी चाहिए। तो देखा यह गया है कि जब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब तब जरूरी नहीं कि मार्केट गिरे, तब मार्केट बढ़ भी सकता है। दिस इज यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट। You can keep the copy of this chart, friends. Very interesting chart, right? It's a US chart. It's a history of US in the last 70 years from 1950 till 2020. इन पिछले करीब 70 सालों में 12 दफा उन्होंने बढ़ाया है। 12 दफा उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया। फेडरल रिजर्व जो अभी बढ़ाया है ना, फेडरल रिजर्व ने पास्ट में 12 दफा बढ़ाया है, राइट? in 1950s, then in 1960s, then 1960s के एंड में, then 1973-75, 1970s, then in 1980s में 3 बार बढ़ाया, then 1990s में बढ़ाया, फिर 1916 के आसपास बढ़ाया, 2016 के आसपास बढ़ाया, और फिर 2019 के आसपास बढ़ाया। 12 बार बढ़ाया, और 12 में से आप देखिए केवल एक बार, यू कैन सी माय कर्सर, इन 1973-75 मिडिल ईस्ट वॉर, जो इजराइल मिडिल ईस्ट वॉर था, इजिप्ट इजराइल वॉर था, उस वॉर के समय ही केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर मार्केट में -8.6% की गिरावट आई। नहीं तो हमेशा मार्केट हैड राइज इन 1950s, मार्केट हैड राइज ऑफ 13.7% विद द राइज इन इंटरेस्ट रेट्स। व्हाट आई एम सेइंग, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और बाजार भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? 13.7%। 1963-65 के बीच में ये करीब बढ़ा 24.5%, राइट? 67, 68, 69 के आसपास दोस्तों ये बढ़ा 7% के आसपास। तो यू कैन सी दैट कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं लेकिन बाजार बढ़ रहा है। हमें क्या सिखाया गया है? इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बाजार गिरता है। ये सही है दोस्तों, पर क्या ये इमीडिएट उस दिन क्या होता है हम सिर्फ ये याद रखते हैं। अगले 2, 3, 5, 6 महीने तक क्या होता है, अगले 1 साल तक क्या होता है, इसकी हम परवाह नहीं करते और याद भी नहीं रखते। हमारी दिक्कत क्या है दोस्तों? हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो मैं इस्तेमाल करता हूं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी द पास्ट एंड एंटिसिपेट द फ्यूचर। आप अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो पहले भी हुई है, फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, क्या ये पहले भी हुआ है? अगर पहले हुआ है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे अगले 6 महीने तक क्या रहा, उस दिन क्या हुआ मत देखिए। वो ट्रेडर है, अगर आप ट्रेडर हो जाएंगे,
कि जिस दिन फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उस दिन बाजार में क्या हुआ। अगर ये देखेंगे तो आप ट्रेडर हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व ने बढ़ाया उसके अगले 3 से 6 महीने में क्या हुआ, ये अगर आप देखेंगे, दैट मींस दैट यू आर एन इन्वेस्टर। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। एंड व्हाई इट हैपेंस नाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ 2 चार्ट्स मैं आपके साथ ये बात करूंगा। एक बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था सितंबर 86 से लेके मार्च 89 तक। कैन यू सी दैट, राइट? आई हैव शोन यू द ब्लैक curve shows you the short term interest rates, that is Fed funds rate. In India we call that repo rate, and red curve gives you the yields of 10-year bonds. So you can see that. Look at the repo rates of US were increased. Repo rate in September 86, they call it Fed's fund rate. I'm using repo rate because Indians are more comfortable with repo rates. So repo rates in September 86 in US were at 6%. At 6%. By the end of March 89, repo rates were increased to 10%. Almost 6 से 10%. 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। 4% कितना बड़ा बात है, अभी तो हम केवल 0.5 की बात कर रहे हैं, वहां 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ा। कितने? 3 साल के अंदर। लेकिन देखिए बाजार S&P जो 220 के आसपास था, 220 के आसपास था, इसके साथ साथ मार्च 89 तक आते आते 320 हो गया। मार्केट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईपीएस ग्रोथ 69% था ड्यूरिंग दिस पीरियड। ईपीएस ग्रोथ का मतलब तेजी। मैंने आपसे क्या कहा? इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट क्या होता है? बॉन्ड की प्राइस गिरती है, स्टॉक की प्राइस गिरती है, और वो वन टाइम एडजस्टमेंट होता है, वो वन टाइम एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, वो तय होता है कि इकोनॉमी में अंडरलाइन भावना क्या है, तेजी की है कि मंदी की है। अगर इकोनॉमी में तेजी है, if India is if the economy is a growing economy, even with the rise in interest rates, market can rise. And this is what, friends, we need to understand. Not once, not twice, not thrice, 11 times out of 12 times it has happened. 12 में से 11 बार ये हुआ, एक दो बार नहीं हुआ है। And this is what, friends, we need to remember. Look at another period, 93 to 95. Repo rates were 3% at the start of the period. At the end of the period, repo rate is 6%. 100% rise in repo rate, 100% rise in interest rates. But look at S&P 500. S&P 500 was somewhere at 430 at the start of the period when interest rate was 3%, and when repo rates were at 6%, it was at 540. Look at the rise in markets. Why it has happened? It has happened because EPS growth during this period has increased by 78%. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये आपको याद होगा, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स इस पीरियड को बहुत एंजॉय किया था, और वो है नवंबर 2003 से जुलाई 2007 तक। आपको याद आया how much money we have made in markets during 3, 4, 5, 6, 7, right? 8 के अंदर मंदी आई थी। Now look at this. In US, repo rates in the November 2003 was 1%, right? By the end of July 2007, repo rates in US were at 5%, 400% rise. 1% से बढ़ के 2 हुआ, 2 से बढ़ के 3 हुआ, 3 से बढ़ के 4 हुआ, 4 से बढ़ के 5 हुआ। इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा। पर S&P 500, which was at 1000, has ended this period by 500 point rise, 50% rise in the markets, because EPS was rising by 61%. So friends, what message I want to give you? Don't only look at what's happening in interest rate. That's for traders. Just look at that. When interest rates is rising, what's happening in the underlying economy? What's happening with the earning per share? Yes, I agree. If we increase interest rates, cost of capital rises. And when the cost of capital rises, it impacts the margin. And when margin falls, profit falls. लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट ऐसे समय बढ़ रहा है जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपके मार्जिन बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि डिमांड सामने है, और डिमांड कब होती है? जब तेजी होती है। So what you have to understand is, don't focus only on one side of the equation, that is cost of capital. Look at the other side of the equation, and that is called return on capital. So you have to understand, is it impacting the return on capital? But if you are able to save your return on capital, right, then you will see that even with rising interest rates, market can rise. और यही बात मैं आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जब बताऊंगा, तो बहुत आसानी से दोस्तों आपकी ये बात समझ में आएगी जब हम इंडिया की बात करें, राइट?
Now I come to the second aspect of today's discussion, रशिया यूक्रेन वॉर. दोस्तों, अमेरिका में एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और जिससे हम सीख सकते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी. कम से कम पूरी दुनिया में मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, if you look at the history of world in the last 100 years, I think one nation which has fought the most battles is either Britain and US. They have fought the most wars in this world, right? The experience of US Army is the most experienced army. The battle-hardened army of the world is US. I think they have sent their soldiers to many parts of the world in the last 100 years. So US knows the impact of war. US has used war in their economy. And what US investors say that the sooner you listen the sound of the cannon, start buying. Right? The sooner you listen the sound of the cannon, आपने तोप के गोले की आवाज सुनी, बाजार में जाके खरीदो. Never be afraid of war. दो ही चीजें होती हैं, तोप का गोला अगर आप पे गिर गया तो चिंता नहीं, और दूसरे पे गिरा तब भी चिंता नहीं. In both the cases, nothing will cost. आपको चिंता नहीं होगी. And this, friends, I can tell you with the help of few charts. ये मैंने देखा है हिस्ट्री में. मुझे नहीं मालूम वॉर का इम्पैक्ट क्या होता है, ना मैं जानना चाहता हूं. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इतिहास में क्या वॉर पहले कभी नहीं हुआ. तो जब भी दुनिया में वॉर हुआ, बाजार में क्या हुआ, राइट? And I'll be able to understand what is the impact of war in the markets, be it bond markets, be it stock market, right? Friends, ध्यान से देखेंगे हम. Look at the first world war. First World War, when started in 1914, believe me, friends, it is on the scale of 100 so that we can compare it easily. It started somewhere in 1914, और 1914 में जब ये लड़ाई हुई तो इतनी चिंता हो गई मार्केट को कि मार्केट बंद हो गया 6 महीने के लिए. You will see that curve is not curve. The curve is a break in the curve. It's a broken curve. You can see that if you can see my cursor. The market, US markets remained closed for 6 months due to the First World War. The war is not ended. War has ended in 1980. Right? Before war, the markets were somewhere at 98, right? And market had a fall, and market fallen to 60. From almost 100 to 60, 40% fall in the markets has happened. But look at this. In 1950, the entire fall, the markets have recovered. And by the end of 2015, markets were 110. Not only they were about 10% compared to the start of the war, from the bottom, it's a recovery of almost 100%. Look at the sharp recovery. And the war is still on. War has not ended. War ended somewhere in 1918. And by the end of 1919, when the war ended, it was at 120. Can you see that? Can you see that, friends? Right? Not only market has war, during the war, markets have given you the return, but markets have recovered before the end of the war. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे कह रहा हूं. जब भी खबर आएगी युद्ध की, बाजार गिरेगा, और बाजार युद्ध खत्म होने से पहले रिकवर हो जाएगा. ये हमेशा हुआ. I want to share a very wonderful story with you, friends. घनश्याम दास बिरला जी का आपने नाम सुना होगा, राइट? जरूर सुना होगा, क्योंकि बिरला फैमिली से आते हैं. पैट्रियट ऑफ बिरला फैमिली. His grandfather was Shivarathan Birla, used to be a small time businessman in Pilani. He was used to do a mortgage business, जिसको आप गिरवी का काम कहते हैं, मनी लैंडिंग का उनका काम था. So their family came to Mumbai. A part of the family came to Kolkata. Kolkata was the capital of India, and Kolkata, the economy of the Kolkata was larger than Mumbai those days. So many businessmen used to come to do business in Kolkata. The family which came to Bombay, they started doing the cotton broking business, and the part of the family which came to Kolkata, they started doing the business of jute broking. 1914 के आसपास, 1913 के आसपास, when Mr. G.D. Birla joined the jute broking business, he was of firm view that he should not remain only in broking, and if he wants to expand his business, if he wants to scale higher heights, then then he should be into the jute production as well. So being Indian, it was difficult to buy jute mills, but he could manage to buy a jute mill, right? Now understand this, friends, what I'm saying you. By 2013 or 14, somewhere in 2013, he had 2 million, capital of 2 millions, right? By the end of 1919, his capital was close to 10 millions. And with 5 million capital, he started a company called Birla Brothers.
with a capital of 5 billions. Now, this billion grown from 2 billions to 10 billion between 1914 and 1918, these 4 periods. What happened in these 4 years? It was war, right? War has given an opportunity to expand his business. And this is what, friends, remember. This is what war creates. War creates huge demand. The moment war will end in Ukraine, the first thing Ukraine will demand is reconstruction. प्रलय के बाद निर्माण होता है दोस्तों, और जब भी निर्माण होता है, इकोनॉमी का नुकसान होना एक अलग बात होती है, व्यापारी को व्यापार करना एक अलग बात होती है। आप इकोनॉमी में कभी कभी ऐसा देख सकते हैं कि इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया पर व्यापार ने अच्छा किया। कोविड में भी आपने इसको देखा होगा, कोविड में भी आपने इसको देखा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनने में अच्छी नहीं लगती है पर ऐसा होता है दोस्तों, राइट? प्रलय में भी निर्माण होता है, वो जो निर्माण होता है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इन्वेंट्रीज में भी आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिस बिजनेसेस को वॉर की वजह से फायदा होता है। Forget about the First World War, friends. Look at the Second World War, and this is even more interesting. Why I'm saying Second World War? Please listen me carefully, friends. बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। I'm talking of world war. I'm not talking of a localized conflict between Russia and Ukraine. A world war is a war which every country participated. Even we have participated. We were ruled by Britishers, and Britishers sent our soldiers to fight in Europe, right? And to fight with Japan, right? Now look at, we participated in World War indirectly, right? Now look at this. What happened in World War? In the Second World War, 3% of the global population died. 3%. And the global population at that point of time, 280 crores. 3% means 8 crores, including civilians. 8 crores died. But look at the markets. Again, at the scale of the 100, markets at the start of the war was at 130. Now you look at during the war in 1939-40, market had a fall of 130 to almost 80. Look at the fall in the market, right? Almost close to 40%, 35-40% fall in the markets. But soon after that, markets from the second quarter of 1942 started recovering. War is on. 1939. War is not ended. War is on. And by the end of Q3 1943, markets were at close to 130, 145. Look at the recovery. Look at the sharp recovery. War ended somewhere in 1945, and by the end of the war, markets were well beyond 150. So what you observe once again, not only the markets have recovered, but markets have recovered before the end of the war. Come nearer, friends. Same thing has happened during the Gulf War, right? As soon as the war started, there was a fall, thinking fast, traders, and then there's a recovery, thinking slow, investors. Thinking fast, thinking slow, right? Similarly, in the World Trade Center, thinking fast, traders, market had a fall of 50%, thinking slow, investors, markets recovers in next 6 months. This is same again is happening in Russia-Ukraine war. War is not ended, but markets have started recovering, friends. So what I am saying that war may damage businesses, war surely damages economies, but war impacts some of the businesses to increase their business, to have better margins and higher profits due to inflationary pressure and the demand creation, because you always go into reconstruction after war, right? So war normally sometimes gives an opportunity also. Remember the saying of US, the sooner you listen the sound of the cannon, buy, right? This is what, friends, I just wanted to cover about what happens during war and rising interest rates in the markets and what has happened in the past. Now I come to the Disha of India. That's Dasha of the world. Now I'll come to Disha of India and the impact of these two on Indian economy and Indian GDP growth rates and Indian markets. बहुत जल्दी से मैं आपके साथ इसको कवर करता हूँ, friends, so that we can take some questions also. Now, this is the sad part of sad story. What has ever happened in the last 2 years? अगर आप खासकर पिछला साल अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि 140 करोड़ रुपया, 17 बिलियन डॉलर FIS ने निकाला, FPS ने निकाला है, right? Can you see that? पहले तो वो छोटा मोटा इन्वेस्ट कर रहे थे, जून में इन्वेस्ट किया, जुलाई में पैसा निकाला, अगस्त में इन्वेस्ट किया,
सितंबर में इन्वेस्ट किया, अक्टूबर से पैसा निकालना शुरू किया, अक्टूबर में मामूली पैसा निकाला, नवंबर में निकाला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप देखिए, जनवरी में मोर देन 30,000 करोड़, February में 35,000 crores, and March में 40,000 crores. For the last 3 months in this 2022, they have withdrawn. क्यों? Why they have withdrawn this money? Fear of rising interest rates, fear of reducing liquidity, and fear of war. रशिया यूक्रेन वॉर, ये तीनों चीजों ने उनको पैसा निकालने के लिए मजबूर किया। वो पैसा क्यों निकालता है? एफआई पैसा क्यों निकालता है? समझ लीजिए, 2 कारण बताता हूं। पहला कारण इससे निकलता है पास्ट एक्सपीरियंस। क्या है उनका पास्ट एक्सपीरियंस? ये है कि जब भी दुनिया में तकलीफ आती है, यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत होता है, डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर होता है, रुपया कमजोर होता है तो उनको नुकसान होता है। दे कैन इन्वेस्ट, पर वो अपने पैसे को, क्योंकि जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो तो 2 रिस्क लेते हैं। आप तो केवल मार्केट का रिस्क लेते हैं, वो करेंसी का रिस्क भी लेते हैं, राइट? So they were fearing that interest rates in US will rise, and if interest rates will US will rise, dollar will expensive becomes. तो अब वो क्यों पैसा निकालेंगे? क्योंकि वो इंडिया में प्रॉफिट कमा रहे थे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंटायर कोविड, एमएससीआई का मैंने आपको इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्केल ऑफ 100, मान लीजिए एमएससीआई वर्ल्ड में आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और एमएससीआई इंडिया में अगर आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल 2020 में, कोविड के समय अप्रैल 2020 में अगर आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप देखिए कि आपका जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो 174 हो गया। कब हो गया? जनवरी 2021 में। लेकिन वो 174 गिर के अभी 136 हो गया। फॉल देखिए इमर्जिंग मार्केट्स में फॉल देखिए, 174 से 136। और अगर मैं बीच की बात नहीं करूं, 100 रुपए की बात करूं, तो उनका 100 रुपया 2 साल में 136 रुपया हुआ है। दुनिया का 100 रुपया 170 रुपया हुआ है, पर इंडिया में जो 100 रुपया उन्होंने डाला वो 217 रुपया हो गया। Gains in India is highest globally in last 2 years. So they wanted to protect their profits because they were fearing rising dollars. That does not happen. Why that does not happen? I'll come. Very interesting. वो बात करूंगा मैं आपसे। लेकिन आप समझ लीजिए कि उन्होंने इतना पैसा क्यों निकाला। इतना पैसा इसलिए निकाला कि इंडिया एक ऐसी जगह थी जिसने उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया, और इंडिया एक ऐसी जगह थी जहां पर करेंसी रिस्क खड़ा हो जाता है जब भी टेपरिंग की बात आती है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आती है। 2013 आपको याद है? 2013 को याद कीजिएगा। आई विल शो यू द चार्ट, राइट? बट दैट्स द रीजन कि एफआईएस ने पैसा निकाला। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफआईएस के पैसा निकालने के बाद भी बाजार नहीं गिरा। हमारे संसद में भी इसके बारे में बात हुई है। जितना विदेशियों ने पैसा निकाला उतना आपने निवेश किया, उतना इंडियंस ने निवेश किया, उतना डीआईज ने निवेश किया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो स्टोरी की आज हम बात नहीं करेंगे, हमारे पास उतना समय नहीं है। लेकिन जो मजेदार बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंडिया के साथ क्या हो रहा है, व्हाई इंडिया हैज गेन द वे इंडिया हैज गेन, व्हाई इंडिया हैज परफॉर्म बेस्ट इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड। इसका रीजन समझ लीजिएगा, इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। आईएमएफ का चार्ट देखिए, बी इट नॉमिनल जीडीपी, बी इट रियल जीडीपी, इंडिया हैज विटनेस्ड हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड। After the fall, recovery I'm saying, after the fall, right? Fall से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। So if you look at 2021, India's GDP growth rate at 9.5% according to IMF. In 2022, this year 8.5%, which is now they have revised to 7.5%, and 2023 6.6%. Average comes 8.2% is highest. Post-COVID GDP growth rate of India, both real and nominal, is highest in the world. हायर देन चाइना। मैंने आपसे बात कहा था चाइना बहुत तकलीफ में है। 30 साल में पहली बार उन्होंने 5% की जीडीपी ग्रोथ रेट को रखा है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडिया की इकोनॉमी अभी आई है कोविड के से बाहर, पूरी अभी भी नहीं आई है, कोविड से बाहर आई है। अभी पूरी एक्टिविटी 100% शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन इफ यू सी इज हायर देन 2019-20, दैट इज प्री कोविड। सो जीएसटी कलेक्शन दिस ईयर is higher than pre-COVID collection. It means that India's businesses, बहुत गौर करने वाली बात है, इंडिया के बिजनेस के प्रॉफिट्स, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स, इंडिया के बिजनेसेस के प्रॉफिट्स आर स्ट्रॉन्गर than pre-COVID. So I have no hesitation to say something to you. मुझे कोई संकोच नहीं है, पूरी हिम्मत के साथ मैं आपसे बात कह रहा हूं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है
वो पोस्ट कोविड इकोनॉमी प्री कोविड से ज्यादा मजबूत है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शो यू सर्टेन इंटरेस्टिंग चार्ट्स फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तीसरी चीज, लिक्विडिटी इंडिया में पोजीशन आप ध्यान से देखिएगा। द लास्ट रेपो रेट फॉल हैपेंड इन जून 2020, कैन यू सी दैट 4% रेपो रेट, right? Repo rate somewhere at 6.5% in January 2019. During COVID, there was a sudden fall. At the start of the COVID, repo rates were 5.5%. They were brought down to 4%. And the last fall in the repo rate happened in 2020, and it came down to 4%. And after that, it maintained at 4% by the RBI. No further fall in repo rates. But look at the average lending rate of the Indian banks are continuously falling. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली फॉलिंग लैंडिंग रेट। क्यों? हम डिजिटल हो गए हैं। डिजिटल होने से बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा रहने लगा है। क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहने लगा है, बैंक आपको लोअर इंटरेस्ट पे लोन दे पा रहे हैं, और हिंदुस्तानी ज्यादा लोन पे पैसा ले पा रहे हैं। पर्सनल लोन लगातार बढ़ रहे हैं। कंजप्शन स्टोरी इंडिया की शुरू हो रही है दोबारा, क्योंकि लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, और पर्सनल लोग लोन देने के लिए तैयार हैं, बिजनेसमैन लोन लेने के लिए तैयार हैं, क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है। वक्त मिला तो बहुत विस्तार से मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो बहुत समय के बाद हुआ है दोस्तों, बहुत ज्यादा समय के बाद में हुआ है। दैट इज रिकवरी इन क्रेडिट ग्रोथ, राइट? Now, what are our concerns in India? Our concerns in India is rising oil prices, fiscal deficit, current account deficit, rising inflation in US, वर्ल्ड और इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता हो रही है। आप चिंता कर रहे हैं कि एफपीआईज बेच रही हैं, आप चिंता कर रहे हैं करेंसी कमजोर हो सकती है, और आप चिंता कर रहे हैं कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो पैसा कहां से आएगा। ये सारे कंसर्न्स एक साथ जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहने वाला हूं, जल्दी से आप देख लीजिएगा। क्रूड प्राइसेस बढ़ने की आप कतई चिंता ना करें, ये मैं आपसे कह रहा हूं, बिना चिंता के कह रहा हूं आप, क्योंकि ऐसी बातें कहने वाले लोग कम मिलेंगे आपको। कोई नहीं कहता आपको ये बात, टीवी नहीं कहती, अखबार नहीं कहता, एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड दैट ऑयल प्राइसेस राइजिंग। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, इंडियाज ऑयल प्राइस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, द शेयर ऑफ ऑयल स्पेंडिंग, एंड दैट्स व्हाई पॉलिटिकली 100 रुपीस होने के बाद भी लोग सड़कों पे नहीं आए हैं। आप याद कीजिए 10 साल पहले 70 रुपए पेट्रोल होने पर लोग सड़क पे आते थे, अब नहीं आते। पीपल आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज ऑयल एज एन एक्सपेंसिव, देयर फैमिली इनकम हैज कम डाउन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ये कहा जाता है कि तेल बहुत महंगा हो गया, 130 के आसपास हो गया है डॉलर, अब ब्रेंट 130 के आसपास हो गया जो 2008 में था। यही तो आपको कहती है ना टीवी, यही तो आपको अखबार कहता है ना। इंडिया इज ए फैमिली, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। This family's income, that is called GDP, this family's income in 2008 was $800 billion. A family which is earning $800 billion was importing oil at $130. What is your income? $800 billion. At what rate you're importing? $130. Now today, India's family's income is $3,000 billion. A country, a family which is earning 3,000, the family which is earning $3,000 billion is importing oil at $130. Do you believe that it's the same thing? How you can say that it's the same thing? आप 800 रुपए कमाते थे तो 130 का भाव देते थे, आप 3000 रुपए कमाते हैं तब आप 130 का भाव देते हैं, and that shows that your share of oil expense in GDP is falling. That's why everyone is comfortable, right? ये हमें सिर्फ चिंता में डाला जाता है। चिंता की बात कम है, उतनी नहीं है जितनी की 10 साल पहले थी। 10 साल पहले तेल के दाम बढ़ने से इंडिया को जितनी चिंता करनी चाहिए थी, उतनी चिंता अभी इंडिया को करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सेकेंडली, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1991 में हमने चिंता क्यों हो गई थी? क्योंकि तेल के दाम ज्यादा बढ़ गए थे, हमारे तेल को दाम चुकाने के लिए डॉलर्स हमारे पास नहीं थे। अभी हम हिंदुस्तान के अंदर जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो 9 लाख करोड़ का करते हैं, लेकिन जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो 20 लाख करोड़ का करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप जितना डॉलर्स आपको चाहिए तेल खरीदने के लिए, उससे 4 गुना डॉलर्स आपके पास में, ये तो नॉन ऑयल है, अगर मैं सारे एक्सपोर्ट मिला दूं तो वो 4 गुना हो जाता है, लेकिन नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स में मिलाता हूं तो वो दुगना है, 2.25 गुना है। जितना डॉलर्स आप ऑयल खरीदने में खर्च करते हैं उससे ज्यादा डॉलर्स आपको नॉन ऑयल एक्सपोर्ट से आ रहा है। पहले ये इक्वेशन नहीं थी, इसलिए आप इस डॉलर की पेमेंट करने में कंफर्टेबल है। अब एक
बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल है, चिंता मत कीजिएगा, मुझे कुछ समय दीजिए, ध्यान से सुनिए, बात समझ में आएगी। बहुत अच्छी चीज है और मजेदार चीज है, ठीक है। ये जो ब्लैक कर्व है ना दोस्तों, ये ब्लैक कर्व है 5 साल का यील्ड, गवर्नमेंट पेपर की यील्ड, राइट। अब इस गवर्नमेंट पेपर की यील्ड अगर आप देखें 2019 में 7.2% थी, अभी 6.3% है। क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद भी, यील्ड्स बढ़ने के बाद भी 2 साल पहले के मुकाबले कम से कम 1% कम है। तो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, नंबर 1। ये बढ़ रहे हैं 6 महीने से, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं 2 साल के मुकाबले अभी भी कम है, नंबर 1। इंटरेस्टिंग ये नहीं है दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक कॉमन इंडियन जब पैसे देता है किसी को उधार पे ना, तो हमेशा उसको उधार पे पैसे देता है जो उसको पैसा वापस चुकाए और डिफॉल्ट ना करे। तो कौन है जो डिफॉल्ट नहीं करता है? गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है, तो गवर्नमेंट सेफेस्ट मानी जाती है। तो जो सेफेस्ट होता है उसको कम ब्याज पे पैसा मिलता है, और जो जितना रिस्की होता है उसको ज्यादा ब्याज पे पैसा मिलता है। वीकर द बोरोवर, हायर इज द इंटरेस्ट रेट्स, हम सभी ये बात जानते हैं। वीकर द बोरोवर, हायर इज द इंटरेस्ट रेट्स, हम सभी ये बात जानते हैं, राइट। इसी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो द ट्रिपल ए कंपनी है उसको कम ब्याज पे पैसा मिलता है, जो डबल ए कंपनी है उसको ब्याज थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, जो सिंगल ए कंपनी है उसको और ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो सिंगल ए तो छोड़ दीजिए, मैं डबल ए और ट्रिपल ए की बात कर रहा हूं। डबल ए और ट्रिपल ए कंपनी 2 साल पहले जब 5 साल का बॉन्ड लेके आती थी, तो सरकारी बॉन्ड के मुकाबले उसको 1.25% ब्याज ज्यादा देना पड़ता था, 1.25% ब्याज। तो अगर सरकार 5% पे पैसा उठा रही है तो उनको 6.25% पे पैसा मिलता था। और डबल ए कंपनी को अगर बाजार से बोरो करना है तो 1.90 के आसपास ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। मतलब अगर 5% सरकार को पैसा मिल रहा है तो 7% पैसा देना पड़ता था डबल ए कंपनी को। पर अभी क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। इस बार जो सिंगल ए कंपनी है वो केवल 9 पैसे ज्यादा देती है, केवल 9 पैसे ज्यादा देती है सरकार से, और जो डबल ए कंपनी है वो केवल 78 पैसे ज्यादा देती है। पहले कितना देती थी? ₹1.25 से लेके ₹1.86। अब कितना देती है? 9 पैसे से 78 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनियों पे लोगों का विश्वास बढ़ा है प्री कोविड। तो मजेदार बात सुनिए, पिछले 6 महीने में यील्ड्स बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, पर प्राइवेट कंपनियों का जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ा है, वो कम हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत लंबे समय बाद बिजनेसेस के प्रॉफिट बढ़ने लगे। और ये सबसे बड़ा संदेश है जो मैं आपको देना शुरू कर रहा हूं। यही बात ईपीएस याद रखिएगा। मैंने आपसे क्या कहा था? मैं वापस पीछे जाता हूं, मैं वापस आऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले सिनेरियो में जो आपको याद रखनी है दोस्तों, वो क्या याद रखनी है, भूलिएगा नहीं, इसलिए मैं पीछे जा रहा हूं। वो है दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, और वो है आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ना। सॉरी, अर्निंग पर शेयर। आई एम नॉट एबल टू गो बैक, देयर इज सम इश्यू, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू गो बैक टू दो स्लाइड्स। लेट मी सी, नो आई एम नॉट एबल टू गो। छोड़िए, आपको याद होगा जब मैं फेडरल रिजर्व की बात कर रहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी मार्केट बढ़ता है। तो यहां पर आप देखिए जो स्प्रेड है, डबल ए कंपनी और ट्रिपल ए कंपनी का स्प्रेड कम हो रहा है। मतलब क्या कि उनका विश्वास बढ़ रहा है। उन पे विश्वास क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी बैलेंस शीट हेल्दी हो गई है। बैलेंस शीट क्यों हेल्दी हुई है, मैं आपको आगे एक तस्वीर दिखाऊंगा और आपको बात पूरी समझ में आएगी, राइट। अब एक और मजेदार चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी टेक्निकल है, माफी चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, मेरे साथ रहिएगा, लेकिन बात समझ में आ गई तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन कर्व है, ये ग्रीन कर्व जो है ये 2019 की थी। तो 2019 में अगर कोई व्यक्ति 3 महीने का पैसा उधार लेता है तो 6.25% ब्याज पे मिलता था, और वो 10 साल का पैसा ब्याज पे लेता है तो 7.5% पे मिलता था। तो आप देखिए फर्क कितना ज्यादा। बिजनेसमैन नॉर्मली क्या करता है? छोटे अवधि का लोन लेता है और बड़े अवधि के लोन पे व्यापार करता है। एक एनबीएफसी है, मान लीजिए एक एनबीएफसी है जिसे आप स्कूटर खरीदते हैं, आप फ्रिज खरीदते हैं। तो आप कैसे फ्रिज खरीदते हैं? आप फ्रिज खरीदते हैं तो 5 साल का लोन लेते हैं। तो आपको लोन देने के लिए जो लोन देने वाली कंपनी है, जो एनबीएफसी है, वो पैसा कहां से लाती है? वो जेब से थोड़ी लाती है, वो भी तो बाजार से पैसा उठाती है। वो बाजार से 3 महीने के ब्याज पे पैसा उठाती है और आपको 5 साल के ब्याज पे पैसा देती है, और बीच का जो अंतर है उसका प्रॉफिट होता है। ये स्प्रेड तो उसका प्रॉफिट होता है। तो पहले इन कंपनियों को बिजनेस करना बड़ा मुश्किल था,
क्योंकि शॉर्ट टर्म के ब्याज में और लॉन्ग टर्म के ब्याज में ज्यादा फर्क नहीं था, और इसको बोलते हैं फ्लैट यील्ड कर्व। और जब भी फ्लैट यील्ड कर्व होती है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कम होती है। अब आप देखिए क्या है, 1/1/2022 को ये 3.59 हो गया शॉर्ट टर्म का ब्याज दर, 6% से गिर के 3% हो गया, और लॉन्ग टर्म का 6.25% हो गया। मजेदार बात क्या है कि अब एनबीएफसी जो पैसा कर्ज पे ले रही है उसको आधी कीमत पे मिल रहा है, 3% पे मिल रहा है, लेकिन आगे जो ब्याज पे पैसा दे रही है उसमें 6.25% ब्याज मिल रहा है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है और बढ़ता है, उसका बिजनेस अच्छा करता है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग जब हो जाता है, जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में फर्क ज्यादा होता है, उस वक्त बिजनेसेस को कमाई ज्यादा होती है, और वो तेजी का सूचक होता है, वो तेजी का सिंबल होता है। अब आप देखिए कि यूक्रेन वॉर की वजह से 29/3 की जो यील्ड कर्व है वो ऊपर चली गई है, मतलब कि ब्याज दरें बढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी शॉर्ट टर्म पे वो 4% के आसपास है, लॉन्ग टर्म में 7% के आसपास है, 3% का फर्क बरकरार है। उसकी जो शेप है, जो अंतर है दोनों में, बरकरार है। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो मैंने आपको दिखाई है। स्लाइड आपको बताती है कि जब तक आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है, वो आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंस को बताती है, और ये बिजनेस का यही कॉन्फिडेंस इस गिरती हुई स्प्रेड को बताता है, जो मैंने कहा था कि आज डबल ए व्यापारी और ट्रिपल ए व्यापारी को कम ब्याज पे पैसा देने के लिए जनता तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, उस पर विश्वास लौट के आया। ये वही हिंदुस्तान है जहां 2018 और 19 में कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी और हम घबरा रहे थे। अब आखिरी चीज, इसी इंटरेस्ट रेट्स को समझने के लिए दशा और दिशा की बात कर रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने पड़ेंगे। आपने आज सुन लिया, क्रेडिट पॉलिसी आपने कल सुन ली। क्रेडिट पॉलिसीज में आरबीआई ने साफ साफ कहा कि अभी वो एकोमोडेटिव स्टैंड को रखेंगे, जबकि अमेरिका 0.5% ब्याज दरें बढ़ा चुका है, उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस बात को आप समझ लीजिए। इंडिया के अंदर इस वक्त जो 10 साल का यील्ड है वो 7.1 है। इंडिया में जो महंगाई है वो 6% है, महंगाई 6%, बॉन्ड यील्ड 7%, 1% का रियल इंटरेस्ट रेट है, राइट। यूएस में जो यील्ड है, जिसको इंटरेस्ट रेट भी आप बोल सकते हैं, वो 3.25% है, महंगाई 8% के आसपास है, जो रियल रिटर्न है वो -5% है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 6.26%। जब तक ये अंतर 6.26% है, तब तक इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकली हाईएस्ट है, और हिस्टोरिकली हाईएस्ट होने का मतलब यह है कि आधा 1% इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ने के बाद भी, आधा 1% यील्ड अमेरिका में बढ़ने के बाद भी, रुपया और डॉलर के बीच का जो रियल रिटर्न है वो गैप 5% रहता है, 4% रहता है। और जब तक ये 4-5% का अंतर रहता है, तब तक हमारे ऊपर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव नहीं आता है। दिस इज व्हाट फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाई आवर रुपी सो रेजिलिएंट। भले ही आपके यहां से विदेशों ने $17 बिलियन पैसा निकाल लिया हो, एफपीआई ने निकाल लिया हो, लेकिन एफडीआई में पैसा लगातार आ रहा है। तो दोस्तों, केवल एफडीआई को मत देखिए, एफडीआई को भी देखिए। जो लॉन्ग टर्म पैसा है, लॉन्ग टर्म पैसा जो इंडिया में है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने आपका काफी वक्त लिया है, लेकिन जल्दी से 2-3 स्लाइड्स में आपको और बता दूं, क्योंकि इन सारी बातें जो मैंने आपको की है उसका लब्बो-लुआब क्या है, उसका इंपॉर्टेंट समरी क्या है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, लुक एट दिस इज द चार्ट व्हाई Indians have not reacted, Indian markets have not reacted the way they have reacted in 2013. Do you remember the first tapering in 2013? Rupee was somewhere at 40 and it fallen to 65. Look at the fall, look at the fall, look at the rise in the dollar against rupee. But this time it has not happened. It is range bound, even though again the Fed has declared the tapering. You know the reason? Two reasons. Number one, inflation is very high in US, reason number one, and more important reason, and reason number two जो मैंने अभी आपको बताया, real interest rates का difference कितना ज्यादा है. That's why India's rupee is stable, resilient, and markets have not reacted. Calm in Indian rupee. You must have observed the calm in Indian rupee and rates. So this is what's happening in the economy. And now this what's happening in the economy and markets linking. I'm linking now interest rates, liquidity, GDP growth rates, and markets. Now all linking. Last 3-4 slides, and we'll be able to understand this. As I told you, India's GDP post-COVID is stronger than India's GDP pre-COVID. You can see that in this chart.
Pre-COVID, India's GDP was continuously falling, GDP growth rate. 2017 GDP growth rate, quarterly GDP growth rate was 8.2%. Pre-COVID, it was 3%. COVID has not come, pre-COVID. So from 8% to 3%, look at the fall, 5% fall in India's GDP growth rate. During COVID, we have a negative GDP growth rate and we have recovered. It's a V-shaped recovery, right? So you can see that India's economy has bottomed out. Before COVID, our GDP growth rate was continuously falling, and now post-COVID, our GDP growth rate is continuously rising. This is what we need to understand. Why this is happening? This is very important, friends. Why India's GDP was falling for the last 4-5 years pre-COVID? क्यों लगातार गिर रही थी? बहुत सिंपल है, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे थे। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, हम नए नए कारोबार जो करते हैं, नई फैक्ट्री जो लगाते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, वो कम हो रहा था। वो कम क्यों हो रहा था? जब वो कम होगा तो जाहिर है जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। वो कम क्यों हो रहा था दोस्तों? वो कम इसलिए हो रहा था कि हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे थे। The corporate profit to GDP ratio was falling, and we know that all of us do business for profits. तो अगर आपके पास प्रॉफिट बढ़ने का मौका नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। 1984, 1991, 2003, 2009 एंड 2020, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये साल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन 5 सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई थी। जीडीपी ग्रोथ रेट कब कम होती है? जब व्यापारी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। व्यापारी कब इन्वेस्टमेंट नहीं करता है? जब वो मुनाफा नहीं कमाता है। जब वो मुनाफा नहीं कमाता तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उत्पादन नहीं होता, उत्पादन नहीं बढ़ता तो रोजगार नहीं बढ़ता, रोजगार नहीं बढ़ता तो जीडीपी कमजोर हो जाती है। तो ऐसे ही समय सरकार रिफॉर्म्स करती है। तो आप 2 साल से सुन रहे हैं सरकार रिफॉर्म कर रही है। व्हाट इज रिफॉर्म फ्रेंड्स? मेरी बात सुनिएगा, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। रिफॉर्म का मतलब होता है व्यापारी को एक ऐसा वातावरण देना जहां पर वो मुनाफा कमा सके। What is economic reforms? Economic reforms is an attempt where government creates an environment where investors and industrialists and businessmen feel confident that by investing they can get good return on their investment. वही तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है दोस्तों। तो हम तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करती है, और पॉलिटिशियंस जो कि देश चलाते हैं उनके दिमाग में भी पॉलिटिक्स नहीं होती है, उनके दिमाग में भी इकोनॉमिक्स होती है। And this is very one year 2020। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखने वाली बात कह रहा हूं आपको। जब भी रिफॉर्म होती है उसके बाद अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, क्योंकि हर रिफॉर्म के अंदर व्यापारी को मुनाफा कमाने का वातावरण दिया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां बिजनेस प्रॉफिट कमा सके। तो अगर आप हिंदुस्तान के अर्निंग पर शेयर की हिस्ट्री देखेंगे, मैंने कहा ना मैं मार्केट जीडीपी ग्रोथ को लिंक करूंगा, अगर आप हिंदुस्तान के अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ को देखेंगे, द बेस्ट ग्रोथ ऑफ अर्निंग पर शेयर इन इंडियन मार्केट्स हैव हैपेंड after 1984, after 1991, after 2003, after 2009 and now after 2020, क्योंकि ऐसा एनवायरमेंट गवर्नमेंट आपके लिए बनाती है, राइट? ये बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो दोस्तों हमें समझने की जरूरत थी। और यहां से मैं एक बहुत ही मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं ये प्रोग्राम सुन रहा था, प्रेजेंटेशन देख रहा था एचडीएफसी बैंक का, और वहां मैंने एक चीज सीखी, एक चीज समझी, और वो मैं आपके पास मैं लेके आया हूं। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको इशारा कर रहा है दिशा क्या है। मैंने आपसे कहा मैं दिशा की बात करूंगा, दिशा की बात करूंगा, तो दिशा की बात सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखिए, HDFC Bank is one of the most efficient bank in India. Why it is efficient bank? On what basis I say this? Very simple. The NPA is HDFC Bank for the last 25 years have always remained lowest in Indian banking industry. What is NPA? When your borrowers default, right? So बैंक का काम क्या है? तो उनका borrower default ना करे। तो हमने क्या देखा कि HDFC Bank बहुत efficient है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही थी। वापस जाता हूं मैं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही थी। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है, आप देख रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट कम क्यों हो रही है? क्योंकि व्यापारी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। व्यापारी इन्वेस्टमेंट कम क्यों कर रहा है दोस्तों? व्यापारी इन्वेस्टमेंट कम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जब व्यापारी का प्रॉफिट कम हो रहा है तो एनपीए कर सकता है। तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक ने क्या किया?
वो रिटेल लोन दे रहा था। 2016, 17, 18, 19 में ये ब्लैक कलर देखिए वो रिटेल लोन दे रहा था। पर जैसे ही गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया, जैसे ही उसको एचडीएफसी बैंक ने देखा कि ऐसा वातावरण बन गया है जहां पर कॉर्पोरेट्स मुनाफा कमा सकते हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, आप ध्यान से एचडीएफसी बैंक को देखिए। एचडीएफसी बैंक ने रिटेल लोन कम कर दिया और यहाँ से होलसेल लोन, बिजनेस लोन को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दिशा को आप समझिए दोस्तों, और यही दिशा मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय के बाद हिंदुस्तान में एक बात बनी है, and this is called turning of cycles. The earning per share of 50 companies of Nifty in 2014 average है calendar year. This is not financial year. This is calendar year. Calendar year 2014 average earning per share of 50 Nifty companies was 368 rupees. In 2015 370 rupees, कोई ग्रोथ नहीं। 2016 369, कोई ग्रोथ नहीं। 2017 388, मामूली ग्रोथ। 2018 407, बहुत कम ग्रोथ। 2019 413, बहुत ही कम ग्रोथ। 2020 397, उल्टा नीचे आ गया। तो आप देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फ्लैट। व्यापारी नहीं कमा रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हो रही है। पर आप देखिए कोविड के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं और मैं आपसे फिर कहता हूं इंडिया जीडीपी पोस्ट कोविड इज स्ट्रॉन्गर देन प्री कोविड। कितना जरूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत समय के बाद में 2021 का जो अर्निंग पर शेयर एवरेज 542 और ये साल जो एंड किया है एस्टिमेटेड 2022 का 757 का अर्निंग पर शेयर है। दोस्तों बहुत लंबे समय बाद अर्निंग पर शेयर साइकिल बदली है और हिंदुस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा बना है जहां पर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। I shown you, don't worry about rise in interest rates, worry about return on capital. Yes, be conscious about cost of capital, but always look at return on capital. And I show you from the history that 12 बार जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है यूएस में 11 बार मार्केट बढ़ता है। क्यों 11 बार मार्केट बढ़ता है? क्योंकि ईपीएस बढ़ता है। और ईपीएस क्यों बढ़ता है? क्योंकि समाज में उस वक्त तेजी होती है, तभी तो सस्टेन इन्फ्लेशन होता है। And this is, friends, what I just wanted to convey to you before I put I will take leave from you. I just wanted to share two things, very interesting things. I started India's discussion with a slide of IMF, wherein I have suggested you, as per IMF, India's GDP growth rate is highest post-COVID for next 3 years. Average GDP growth rate. अब IMF की आपको एक दूसरी फोरकास्ट दिखाता हूँ और वो ये है। At the end of 2021, India's GDP was 195 lakh crores. It will be 389 lakh crores by the end of 2026. मैं नहीं कहता हूँ, IMF का ये फोरकास्ट है और IMF कह रहा है कि अगले 5 साल में GDP दुगनी हो रही है हिंदुस्तान की, जो कि अगले कुछ सालों तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। तो सोचिए अगर इंडिया की GDP दुगनी होने वाली है अगले 5 सालों में तो ये बाजार कहाँ जाएगा? ये जो येलो आप कॉलम्स देख रहे हैं इंडिया का बाजार है और आप रिश्ता देख सकते हैं इंडिया के बाजार का जीडीपी ग्रोथ के साथ। तो अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अगले 5 साल में दुगनी होती है तो वेयर द मार्केट्स विल बी एंड व्हाट्स हैपनिंग इन ईपीएस। दो ही चीजें तो बाजार देखता है, जीडीपी ग्रोथ क्या है और मुनाफे में ईपीएस में ग्रोथ क्या है। तो ईपीएस ग्रोथ आपको बहुत लंबे समय बाद मिल रही है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऐसे में आप तय कीजिए कि आपको अपना एसेट एलोकेशन करते हुए इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड रहना है। बहुत ज्यादा टीवी सुन के ट्रेडर के जैसे नहीं सोचना है। मैं ये नहीं कहता कि जो खबरें आ रही है वो गलत है, मैं ये भी नहीं कहता जो खबरें आ रही है उसका इम्पैक्ट आपको गलत बताया जा रहा है। खबर सब सही है, वो टेलीग्राम आपके लिए नहीं है, वो टेलीग्राम दूसरे का है। कृपया मत खोलिए, मत पढ़िए। दूसरे की खबर आपके लिए खबर नहीं है। इट्स नॉट ए न्यूज, इट्स ए नॉइज। फ्रेंड्स, यू आर गिविंग मी योर टाइम, एनजे इंडिया यूनिवर्सिटी आर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। आपके सवाल हैं तो मैं हाजिर हूँ। एक बात आपको बता दूं कि एफपीआईज हैव स्टार्टेड टर्निंग पॉजिटिव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अप्रैल में पॉजिटिव एफपीआईज वापस पॉजिटिव हो गए, जो बहुत तेजी से निकाल रहे थे, नाउ दे आर पॉजिटिव। विद दिस गुड नोट आई वांट टू एंड माय टॉक। ओके, सो आपने आपके प्रेजेंटेशन में आज वी हैव कवर्ड टू मेनी टॉपिक्स। Perhaps it is a little tough to digest too many things and too much data in a single hour, I mean. So what I've tried to do is जितने भी सवाल आए हुए हैं उसमें मेरा काम है वो पूछना
आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हुए आंसर देने की कोशिश की है, बट फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की है, जो मैं एक एक करके आपको पूछता हूँ. तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने एक जिक्र किया FIIs का, यू स्पोक अबाउट FIIs, why they withdraw money, and you also spoke about the amounts, the volume of amounts that they redeemed, and still the markets are growing because more than the money which has gone out of the system through FIIs, we as Indians have invested, and that's the reason why the market has not suffered a setback. And so, but there is one question related to this point. Somebody is asking me, FIIs act very smartly, and once they make their profit, they get away from the investment. I mean, they just redeem the money. So why should we not do the same thing as investor, retail investor? No. First of all, I'll not say that they act smartly, right? It's only a hindsight bias, right? Yeah, I think this time they have not acted smartly, right? yeah, Try to understand, sir. Very simple reason that when FIs come to any country, now they take two risks. What are the two risks, friends? That's a currency risk, right? Amol bhai, there is something called flight to safety. Whenever there is a negative news, whenever yeah, there is a bad news, and whenever you are fearful of the future, you try to protect yourself, right? correct, And whether you find it right or wrong, you find it good or bad, I have no hesitation to say this. World over, everybody believes that if you are in trouble, dollar is the safest currency to be in, राइट. correct, तो जब भी आपको इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर डर लगता है ना, तो हर कोई डॉलर में ही रहना चाहता है. Now, understand one thing. I have invested in emerging markets. I have come out of US. I have invested in Africa. I have invested in Latin America. I have invested in China. I have invested in India. What I see that among all these countries, everywhere I am in loss. This is the only place I am in profit. in Where India. they will book profit? Yeah, Where they will book profit? They will book profit only in India. Number one. But look at this. April now they are positive. अमोल भाई ध्यान से सुनिएगा. पैसा कहां से निकाला है? इंडिया से. और जैसे ही उनको फ्लाइट टू रिस्क खत्म हो जाएगा, जैसे ही उनको लगेगा कि चीजें अब ठीक हैं और मुझे वापस बाहर जाना है, तो जहां पहले से पैसा निकाला नहीं वहां तो डाल ही नहीं सकते. कहां डालेंगे? जहां से उन्होंने पैसा निकाला. correct, They never act smart. Don't say that they act smart. Rather they are destined to invest in India. correct. उसका So how एग्जांपल आपको would देता हूं. जब correct, से वो आए हैं इंडिया में ना, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कम नहीं होता है. right? So how would you connect these both things? I mean, FII is an entirely different entity for a retail investor like me, let's say, or somebody who has asked this question. They depend on us. They depend on us. I've shown you two charts. I've shown you two charts. I've shown you a chart of FDI, which is long-term money. There is Yeah, no fall in FDI. yeah. FDI is continuously falling, continuously rising. It's only FPI where there was a fall. So it's a So there is temporary fall. It's correct. a market call, and they will come back. So as a And retail history suggests, investor, Amol, why history suggests one thing. What is acting smart? Acting smart is whenever FI has withdrawn, they have given you wonderful opportunity. That's when called acting smart. correct. Right? So we don't need to replicate what they are trying to do because they are from somewhere else. We are from here. We need more conviction about what is happening right in front of us, and we should stay invested. That is what I'm taking from you as an answer. I mean, We have a liberty to look at only economy and markets. They yeah, are pressure. of course, They have pressure to look at currency as well. right, It can be a currency call sometimes. correct. The second question is about the data which we were speaking about in terms of RBI policy, which just I mean came some days back. So the reverse repo rates are the same, but they also have shifted their focus from growth to controlling inflation. That is what we were speaking. I mean right now, Yeah. right? तो इन्फ्लेशन को उन्होंने रिवाइज करके अपवर्ड एक सिनेरियो बताने की कोशिश की है दैट द इन्फ्लेशन में राइज एंड जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा लोअर एस्टिमेट उन्होंने दिया हुआ है. So ये वाले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में इन रेफरेंस टू दिस बैकग्राउंड, if somebody is interested into investing into a debt fund, will it make more sense to go into a category like floating rate fund where you know or a debt fund portfolio where the maturity is not very long, average Uh, uh, maturity?
I'll not be very. I'll not say this exactly. See, we are into a rising interest rate scenario. We are in a हाँ, scenario where the RBI has suggested that average inflation will rise, but still, average inflation, the targets they have kept is 5.7% for year 22, right? yeah, 22, 23. 5.7% is very well within to their target of 4 to 6%. So it will not impact their monetary policy. Number one. Number two, if you strongly believe that interest will rise, you should remain in the medium to shorter end of yield curve. That also correct. is there. But Yeah, one interesting thing, Amol Bhai, which I have covered also, what's happening in spreads? See, yields are rising, but spreads are falling. What yeah, does it mean? It means that private sector's balance sheet is improving, private sector's health is improving, private sector's profit is increasing, and private sector's rating is improving. So it can happen with the improvement in the rating of the company. Say a single A company becomes double A company becomes triple A. They can yeah, give you duration impact on a positive side in a scenario where the interest rates are rising. So what I correct. will suggest that you can consider a part of your debt investment to the corporate bonds, Okay, short to medium term corporate bonds. That can be considered. right. The third question is about somebody is asking about in the same context of inflation, whatever data the government publishes as a rate of inflation which is going on, backwards, forwards, whatever it is, and the actual prices of commodities and things. There is a huge mismatch. I mean, reading that the rate is somewhere around this, and that the actual higher price you have to pay for basic things, or things which are necessary for everybody, that somebody is asking, that's a huge mismatch. Why this mismatch? I mean, That mismatch is always there. yeah, That why? mismatch is always there. Amol bhai, I'll give you a piece of information. और मेरी बात सुनिएगा अमोल जी, ये हाँ, मैं सबसे बड़ी चुनौती दे रहा हूं, सबसे बड़ी चुनौती दे रहा हूं, ध्यान से इस बात हम्म, को समझने की जरूरत है। हाँ जी, आप जानते हैं यूएस का 20 साल का इन्फ्लेशन क्या है? लेस देन 2%। पर यूएस का लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या है? 13%। right, गुड एजुकेशन, गुड मेडिकल, लग्जरी एंड ट्रेवल कितना है? 13%। गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन अलग होता है, आपके correct. लाइफ का इन्फ्लेशन अलग होता है। Even like, अगर I mean, गवर्नमेंट का हाँ, इन्फ्लेशन 5-7% है ना, तो आप 5-7% टारगेट मत कीजिए, आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। आपका इन्फ्लेशन 12% होता है और आपको 12% को हराना है अमोल भाई, correct. राइट? सो And even when we are speaking about inflation in common things which everybody needs to buy, if we compare those, the higher price which everybody has to pay for those things as compared to the inflation which is happening in medical cost, even then there is a huge mismatch even within India. I mean, yes, so that so is always key. that challenge remains. But one Yeah, good thing, what Amol भाई, the good thing is government policies and RBI policies will always remain in CPI. वो तो पॉलिसी तो उसी पे बनेगा ना, correct है, correct है. ठीक है? अच्छा, भाई somebody आपको is, आपको इन्फ्लेशन 10% मिल रहा है, आप कहेंगे इन्फ्लेशन 12% है, पर आरबीआई का आंकड़े में 5% है, तो आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ाएगा, उसका पॉलिसी तो 5% पे ही है ना। right, ये मैं right, कह रहा हूँ, right. ठीक है? The next question is somebody is wanting to know, ऐसा कोई आप फंड बताइए जिसमें रिस्क लो हो और रिटर्न बहुत हाई हो, तो वो अब थोड़ा मतलब वो अपने पास भी डेटा नहीं है कि इनका रिस्क का डेफिनेशन क्या है, लो रिस्क मतलब इनका कितना है, वो अपने पास अभी है नहीं. तो आई विल सजेस्ट कि आप आपके एडवाइजर से बात करिए, हमारे जो एनजे के एडवाइजर है वो आपके साथ बैठेंगे, आपका रिस्क समझेंगे, आपका रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी समझेंगे, और थोड़ा फिर विस्तार में उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना कोई टाइम होराइजन मेंशन नहीं किया हुआ है, रिस्क कितने क्या चीज को रिस्क बोलना चाहते हैं वो कोई फिगर्स में मेंशन नहीं किया है. तो आई विल सजेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक सजेशन दूंगा, राइट? हाँ, मैं फंड का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तरीका हाँ, बता दूंगा मैं आपको, जहां हाँ, पर आप एक मजेदार काम कर सकते हैं। आप हाँ, अपना रिस्क कम कर सकते हैं और आप रिटर्न भी बढ़ा सकते हैं। एंड दिस वाज सजेस्टेड बाय हैरी मार्कोविट्ज, जिसके लिए अच्छा, उनको नोबेल प्राइज मिला, राइट? उसको वो बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर, राइट? या, तो अगर आप अपने एडवाइजर के साथ में बैठ के काम करें कि जो भी आपकी सेविंग्स हैं, इस सेविंग्स में से कौन सा हिस्सा आप 1 साल में काम लेंगे, एक 3 साल में काम लेंगे, 5 साल में काम लेंगे, 10 साल में काम लेंगे, आप पैसे को कब इस्तेमाल करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करके फंड को चूज करेंगे ना,
तो आपका जो एसेट एलोकेशन होगा उसमें आपका रिस्क कम हो जाएगा और रीएडजस्टमेंट की वजह से रिटर्न भी बढ़ जाएगा। हायर, करेक्ट। अपने एडवाइजर के साथ बैठ के ये काम कीजिए, यू विल अचीव दिस। करेक्ट। हमारे पास एक आज का विषय नहीं है, बट बिकॉज एक अमोल क्वेश्चन भाई चल रहा है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। एक अपने आप में एक बड़ा टॉक है ये, जो कभी किया जा करेक्ट। सकता है। तो उसका एक हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे एक रेडीमेड आंसर है जो हम लोग बहुत सारे मीटिंग्स में मेंशन करते रहते हैं और कवर करते रहते हैं, विच इज नथिंग बट मार्क्स। सो अगर हमारे ये जो अपने जो इन्वेस्टर है वो अपने एडवाइजर के साथ बैठेंगे, आई एम वेरी श्योर ही विल बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड, make in the first place understand what his need is and then give a suitable thing which is good for him. तो अभी और उसके बाद का एक क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सेक्टर अभी बता दो, इतना सब बता दिया, अभी सेक्टर भी आप बता दो कि कौन सा परफॉर्म करने वाला है ये साल। देखिए एक चीज तो मैं आपको बताऊं अमर भाई, दुनिया जो आने वाली दुनिया है ना, पहली बात तो ये है कि आप let me tell you something very interesting. I'll take 2-3 minutes for this question. Amol bhai, now I am doing this job for almost 18 years, right? So 18 साल पहले मैं बोलता था एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए। आज भी बोलता हूँ एसआईपी कीजिए, पर जिसने 18 साल क्यों कीजिए? वेल्थ क्रिएट करने के लिए कीजिए। करेक्ट बात। टू क्रिएट वेल्थ। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जिसको मैंने 18 साल पहले बोला था एसआईपी कीजिए, उसने तो वेल्थ क्रिएट कर ली। अभी उसका पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए ना उस आदमी से जिसको वेल्थ क्रिएट करनी है। करेक्ट। तो जिसने वेल्थ क्रिएट कर ली है ना, उसको दुनिया भी देखनी पड़ेगी, उसको परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी इसको करना पड़ेगा, राइट? तो कुछ सेक्टर्स हैं, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? जैसे वो एलन मस्क बोलते हैं कि आपके घर की छत जो है, मैं ऐसी छत बना के दूंगा कि वो छत से जो धूप पड़ेगी उसी से आपके घर की एनर्जी हो जाएगी, सोलर रूफ, ठीक है ना? ये जो सेक्टर्स हैं, दे आर सेक्टर्स ऑफ फ्यूचर। उनको इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, दे विल कीप गिविंग यू गुड रिटर्न्स, राइट? The growth of these sectors are anticipated to be 25 to 30% year on year basis. निश और कैटेगरी। हाँ, और ये वो सेक्टर है जहां पर जो प्राइस और कॉस्ट है वो भी लगातार, देखिए इंडस्ट्री आपको कौन सी इंडस्ट्री आपको प्रॉफिट्स देती है जहां एवरेज कॉस्ट कम होता जाता है, राइट? नाउ दिस इज पैन ग्लोबल सेक्टर, राइट? वो रहेगा। नाउ कम टू इंडिया। India's GDP growth rate potential is 8%, right? Yeah. We lost it, we came down to 4%. Now we are recovering, but this is a recovery, so our GDP growth rate is high. तो हम जब 8% से गिर के 4% पे आए तो निफ्टी में 11 सेक्टर है। 11 सेक्टर में से कुछ सेक्टर हैं जिन्होंने अच्छे नंबर दिए, वो तो और अच्छे नंबर अब नहीं दे सकते, वो तो नंबर अच्छे दे रहे हैं, आगे भी अच्छा आपको नंबर देंगे। पर निफ्टी को, इंडिया को वापस 4% से 8% पर लेके आना, तो कौन सा सेक्टर लेके जाएगा? जिसने लॉस किया है। तो अगले 2-3 साल जो है ना, इंडस्ट्रियल्स, केपर्स, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करने वाले, बैंकिंग, दीज आर द सेक्टर्स व्हिच कैन गिव यू गुड रिटर्न। ओके। उसके बाद एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं मेरा आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। एक है कि ये आपसे आंसर चाहते हैं, मैं बता सकता हूँ बट फिर भी आप बताओगे ज्यादा अच्छा है, कि सब लोग जो मिलने आते हैं एडवाइजर्स, वो एवरीबॉडी सेज कि आप इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, लमसम व्हाटएवर, बट कोई आके खुद ऐसा बोलता नहीं। जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर दिया कि किसी को मैंने 18 साल पहले बोला था एसआईपी शुरू करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक है? वेल्थ क्रिएट हो गया तो शायद अभी वो वेल्थ मैनेजमेंट या एक अलग ही चीज कोई उनको चाहिए है। वेल्थ क्रिएशन तो डेफिनेटली हो चुका है। तो एक सिंपल क्वेश्चन इनका ये है कि सब लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में आके मिलते हैं, बट इतना ही बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करते रहो या तो एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते रहो। कोई ऐसा नहीं आके बोलता है कि अभी आप पैसा निकाल। तो मुझे लगता है कि अगर गोल मैपिंग किया हो और दोनों की प्रॉपर बात हुई हो और गोल अचीव हो गया हो, तो बिल्कुल बाकायदा पैसा निकालना चाहिए। कोई उसमें, दैट इज माय आंसर टू हिज क्वेश्चन। आई मीन, फिर कोई इशू नहीं है। जिस पर्पज से किया था इन्वेस्टमेंट, वी एट एनजे बिलीव कि आपके पास पैसा है वो एक चीज है, बट अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको बहुत बहुत क्लैरिटी होना जरूरी है कि इसका पर्पज क्या है इन्वेस्टमेंट का।
और फिर अगर वो पर्पस या ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है और उसके बाद अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो बिल्कुल कोई उसमें कोई इशू ही नहीं है। Now what happens, Amol ji, देखिए, हाँ assume करें कि you start a journey. हाँ You are from Ahmedabad and you have gone to Vadodara. Assume that, करेक्ट। right? The distance of 110 kilometers, right? And you visited your friend's place in Ahmedabad and you're returning back to your home. So when you will start from Ahmedabad, na, you have your car. Car is a vehicle you're using, and the sooner you reach highway, na, you scale the speed of 80, 90, 100 kilometers an hour. It's an expressway, तो आप 90-100 किलोमीटर पे गाड़ी चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि वडोदरा अभी 100 किलोमीटर दूर है, राइट? आपको पहुंचना क्या है? वडोदरा में अपने घर पहुंचना है, ठीक है? और आप 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पे गाड़ी चलाते हैं। फिर वडोदरा आ गया, अभी आपका घर 15 किलोमीटर दूर है। आप देखेंगे आपकी गाड़ी का स्पीड अपने आप कम हो जाता है, वो 80 रहता ही नहीं है, वो 60 हो जाएगा। करेक्ट। आप बिजी मार्केट में आ गए, स्पीड आपका 40 हो जाता है। आप घर की गली में आ गए, स्पीड 10 हो जाता है। आप घर आ गए, जीरो कब होता है? जब आप घर आते हैं तब जीरो होता है। सही बात। ठीक है, तो मैंने आपको एसआईपी करने के लिए बोला, 15 साल का एसआईपी करने के लिए बोला, 20 साल का एसआईपी करने के लिए बोला। इसका मतलब क्या है? इसका एसआईपी या लमसम जो भी है, इसका मतलब क्या है? 2020 में आपने 10 साल के लिए पैसा डाला, हाँ मैं बोलूंगा 10 साल का पैसा है। 2023 में वो 9 साल रह गया, 2025 में वो 7 साल रह गया, 2028 में वो 4 साल रह गया, 2031 में वो 1 साल रह गया। तो जैसे ही वो 1-3 साल में आ गया तो वो डेट में आना शुरू हो गया। आपको विड्रॉल करना, आपकी कार की स्पीड आप कम करते हैं ना, डेस्टिनेशन जैसे पास में आता है। तो वैसे आपने 100 रुपया 2022 में डाला है ना, तो 2029 में 100 में से आपने 50 रुपया निकाल दिया, 2030 में से आपने 30 रुपया निकाल दिया, 2031 में आपने 10 रुपया निकाल दिया, और 2032 में पूरा पैसा निकाल दिया। इसमें बताने का जरूरत नहीं है। इट्स नॉट पॉइंट टू पॉइंट, इट्स अ कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग प्रोसेस, जो कि जैसे जैसे आपका डेस्टिनेशन पास में आता है वैसे वैसे आपके विड्रॉल्स शुरू हो जाते हैं। शुरू होता है। और विड्रॉल्स के बहुत सारे तरीके हैं, विड्रॉल्स की बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की जरूरत होती है। किसी को मंथली होता है, किसी को क्वार्टरली होता है। सो एवरीबडी इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्या फ्रीक्वेंसी पे पैसा चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएट हो चुका है उसमें से। तो वो हर एक चीज का सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे है। अगर यू नो इफ दे ट्राई एंड मीट आवर एडवाइजर्स और दे कॉल देम, सॉल्यूशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। आई मीन इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग टू विड्रॉ द मनी। आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। आप पैसा कब निकालेंगे, यू डिसाइड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। Yes. It should be predetermined, number 2, it means that it should be predetermined, और मार्केट को देख के कभी नहीं निकालेंगे। वो रिएक्शन है, वो रिएक्शन है। डोंट बी रिएक्शनरी, इट शुड बी प्रीडिटरमिन्ड। अगर आप वो नहीं करेंगे तो अभिमन्यु बन जाएंगे। चक्रव्यूह में जाने से पहले चक्रव्यूह में से कैसे निकलना है आपने पहले तय नक्की किया है, पहले नक्की किया है। करेक्ट, अभिमन्यु नहीं बनना है। सही बात है। अभी सबसे आखिरी सवाल, और जो आजकल फ्लेवर है और यू नो बहुत सारी चीजें उसकी इर्द गिर्द हो रही है, क्रिप्टो करेंसी पे आपका क्या ओपिनियन है और क्या करना चाहिए? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। See, I'll not be able to say much about cryptocurrency, Amolji, because I myself have not spent much time to understand this for a very simple reason. Cryptocurrency in India doesn't give you a counterparty risk. What's a counterparty risk? That if I buy it from someone, if that person defaults, nobody will make good my loss, right? Till that risk is not covered, cryptocurrency will not be a serious asset in my portfolio. Correct. This is my personal. Also in terms of regulatory, I mean, somebody needs to be there, just like in mutual funds. If somebody is overseeing what is happening, so somebody from that angle is needed. Regulations are needed. I think we have not even started. So right now, perhaps is not the right time or good thing to do that. I mean, this is my personal thinking. Second, some of the people, those who advocate cryptocurrencies, says that central banks have become like big lords, and they are printing currency the way they want, the kind of currency printing they are doing, the kind of currency they are supplying. The future of currency is not good, and currency will be will start losing value. So you should be into cryptocurrency. So I subscribe to that at all, but still there is a school of thought which says this. Thirdly, and very interesting,
cryptocurrency or Bitcoin is based on a technology called blockchain. Yeah. Blockchain has a future and super future. Why blockchain has a future? क्योंकि blockchain में क्या है अमोल जी कि वो टेम्पर नहीं की जा सकती है. What does it mean? It means that आपने देखा होगा कि आप लैंड खरीदते हैं, राइट? तो लैंड का टाइटल क्लियर होना चाहिए. आपको कभी समझ में नहीं आएगा टाइटल क्लियर है कि नहीं क्लियर है. And you have to go for encumbrance certificate. Who gives you encumbrance certificate? Advocate gives you encumbrance certificate. And advocate charges a very large, big fee for that. ब्लॉकचेन में जिस दिन ब्लॉकचेन इंडिया की गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करेगी, आपके सारे लैंड होल्डिंग्स ब्लॉकचेन में आ जाएंगे. आपको एडवोकेट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कभी भी देख सकते हैं कि लैंड आपके नाम पे है और दुनिया में कोई उसको टेम्पर नहीं कर सकता. Nobody can create title, right? So blockchain has a future. All your financial transactions, all your uh, registers, ownership registers, all your titles, everything in future will be in a blockchain. So blockchain per se will have future. Cryptocurrency, I can't say what big cryptocurrency will be. But to be honest with our viewers, friends, I is not the right person to ask this question of the future of cryptocurrency or whether it's a good asset to be in or not. Okay, thank you very much. This was my last question. On behalf of NJ family, all our partners and investors who are with us today, and of course to you and HDFC Mutual Fund, we thank you for your time. And I am very sure बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रश्नों का उनका उत्तर मिला होगा. और आज के ये सेशन की वजह से उनको उनके ये जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें अच्छी खासी मदद होगी. दैट्स व्हाट आई. Thank you, Amol bhai. Thanks for this opportunity, and thank you, NJ Invest, and thank you, friends. नमस्कार, जय हिंद. Take care. कोविड गया नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा. Take care. Yes. Thank you.